Hello, dear friends. A recent small incident that happened in the court case has prompted me to make this video today to give you all a message. हाल ही में कोर्ट केस में एक घटना हुई जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ आपको एक मैसेज देने के लिए. And that's why this video. But before I move on, let me apologize to all of you for one thing. Many of you have complained that the volume level of music in the video that I made of the books tour was very high and distracting. I'm extremely sorry for that. In my estimation, the volume level was all right, but in fact it proved to be much higher and distracting. So I'm sorry, I couldn't even edit that video after uploading it on the channel, and that's why the volume levels continued. मगर उसके बावजूद मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया. बहुत से दोस्तों ने रिमार्क्स दिए कि वो वीडियो उन्हें बहुत पसंद आया और इंस्पायर भी किया. So thank you very much for that. The next thing that I want to say to all of you is thank you very much for the number of subscribers. Welcome all the new subscribers. Now we are 41,000 plus. So all my new subscribers, thank you for subscribing and welcome aboard. तो हुआ यूँ कि जो मेरे परिचित है उनका एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला कोर्ट में चल रहा है. वो अपने चाचा के खिलाफ लड़ रहे हैं. अब जिस प्रॉपर्टी पर मेरे परिचित अपना हक जता रहे हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक विल उनके अपोजिट पार्टी के फेवर में जो उनकी दादी थी उन्होंने कर रखी थी. सो द पार्टी ऑन माय एक्वेंटेंस, not my client actually, but my acquaintance, had filed a civil suit for declaration of that will as invalid and for claiming 1/2 share in the property. The trial court actually granted some different relief. Trial court granted 1/3 share in the property. The acquaintance जो मेरे परिचित है उन्हें 1/2 चाहिए था, बट ट्रायल कोर्ट ने 1/3 दे दिया. सो हुआ यूँ कि दोनों पार्टीज़ नाराज़ हो गई, अग्रीव्ड हो गई, व्यथित हो गई. मेरे जो परिचित थे उनको 1/2 शेयर चाहिए था और उनके जो चाचा थे जो अपोजिट पार्टी थे उन्हें कंप्लीट शेयर चाहिए था, कंप्लीट प्रॉपर्टी चाहिए थी. सो बोथ ऑफ देम गॉट अग्रीव्ड. सो बोथ ऑफ देम फाइल्ड फर्स्ट अपील इन द फर्स्ट अपेलेट कोर्ट. Both the appeals were heard together and finally decided. And in that appeal, the first appellate court ruled in favor of my acquaintance and against his uncle. What the first appellate court did was to grant 1/2 share to both the parties in the property. With that, my acquaintance was satisfied, but not his uncle, the opposite side. My acquaintance wanted the decree of the first appellate court to be executed, but the uncle wanted the decree and judgment to be challenged in the High Court. So the uncle the opposite side filed a second appeal in the High Court challenging the judgment of the first appellate court. And while that appeal was pending, my acquaintance filed execution proceeding before the execution court for executing the decree of the first appellate court. I hope you are understanding this, and I have tried to put this in as clear words as possible. If you are getting confused, please rewind the video and watch it again. So the situation was that my acquaintance wanted the decree of the lower appellate court to be executed, and the opposite side wanted it to be stayed. So he filed second appeal. Now this acquaintance very heartily desired that the appeal of his uncle, the second appeal of his uncle in the High Court, should be dismissed in the very first hearing itself, at the very admission stage on the very first day itself. It happens, whenever the High Court doesn't find any substance in the
proceeding in the second appeal of the party, then the High Court may dismiss that second appeal on the very first day. But if it finds that the appeal involves a substantial question of law, the High Court may proceed to hear the matter without dismissing it. Now, my acquaintance very much desired the appeal to be dismissed at the very first hearing. So he engaged a senior advocate to oppose the second appeal strongly. The matter was heard, and the court found that the case did involve a substantial question of law and that it needed to be decided. So the court did not dismiss the second appeal, issued notices to the other side, and also granted interim stay to the judgment and decree of the first appellate court, which my acquaintance wanted to execute. Now, seeing that the judgment of the first appellate court was stayed by High Court, this acquaintance got dejected and he remarked कि यार प्रेस्टीज इशू बनाया है हमने, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं करना था. That was the thing which prompted me to make this video and to bring a message to you all. देखिए, वो जो acquaintance था उसने क्या कहा, वो डिजेक्ट हो गया, मतलब वो डिप्रेस हो गया, नाराज़ हो गया, व्यथित हो गया कि हाई कोर्ट ने क्यों सुनना चाहा है, क्यों स्टे कर दिया है, क्यों नहीं डिसमिस कर दिया उसके अपोनेंट का केस. क्योंकि इन महाशय ने उस केस को लेकर एक प्रेस्टीज इशू बनाकर रखा था. अब देखिए, अगर आप जुडिशियल प्रोसेस में अपने मामले को लेकर कोई प्रेस्टीज इशू बनाओगे तो आपके डिज़ायर के हिसाब से ही सब बातें नहीं होगी. इन द कोर्ट्स थिंग्स आर एग्जामिन्ड ऑलवेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ. तो आपने कह दिया कि ये मेरा प्रेस्टीज इशू है, मुझे तो जीतना है, मगर लॉ आपके फेवर में है या नहीं है, इन चीज़ों पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करेगी. आपने अपने लिए प्रेस्टीज इशू बनाकर रखा होगा, मगर न्यायालय को इससे क्या लेना देना. कोर्ट विल ऑलवेज वे द मैटर अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मेरिट्स. उसके गुणवत्ता के आधार पर कोर्ट केस को डिसाइड करेगा, ना कि क्या एक पक्ष ने इसमें प्रेस्टीज इशू बनाकर रखा है या नहीं. वो तो मायने ही नहीं रखता. That's what I want to tell you, my friends. If you are fighting your cases in the courts by making it a prestige issue, then you will have to be ready for facing frustration. Maybe you will win eventually, but you may also be required to face frustration. You may feel depressed, negative. So, the thing that I want to tell you, do not stake your prestige in court cases. मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने एक हिंदी मूवी देखी थी, उसमें प्राण जी का एक कैरेक्टर था, जिस कैरेक्टर ने पहले LLB करके रखा था मगर प्रैक्टिस नहीं करता था कोर्ट में. तो उसमें एक सीन था जिसमें उनका झगड़ा किसी से हो गया और किसी मामले पर लेकर झगड़ा हो गया. तो उसमें बड़े ही गुस्से में वो कैरेक्टर बोला उनसे, उन अपोजिट पार्टी से, कि भले ही हम वकालत नहीं करते मगर अदालत में आपको देख लेंगे. एज इफ द कोर्ट इज देयर टू ग्रांट हिम रिलीफ जस्ट बिकॉज ही अप्रोच्ड द कोर्ट, जस्ट बिकॉज ही मेड दैट स्टेटमेंट टू द अपोजिट पार्टी. ऐसे कोर्ट में नहीं होता है मेरे दोस्तों. आप अपनी केस अपने गुणवत्ता के आधार पर स्ट्रांग बनाइए, अच्छी बनाइए. केवल एक किसी मामले में प्रेस्टीज इशू आपने कर लिया उस पर नहीं, उसके आधार पर मत लड़िए. नाउ दिस acquaintance later told me that his uncle had behaved very badly with his father many years back and therefore उसकी चीड़,
उसका जो ये था गुस्सा, that anger was boiling within him and he wanted to take revenge, and that's why probably he had made that matter as his prestige issue. But ultimately what is important is the legal merits of your case, how much sound your case is on the points of law as well, not just on facts. तो ऐसे में अगर आपने कोर्ट केस को अपना प्रेस्टीज बना लिया, what may come your way is waste of, say, energy, money, your time, and frustration. So you have to be ready for accepting what comes from the court in the form of a judgment on merits of the matter. Make the merits of your case stronger. I hope the message has reached you. Thanks for watching.